have a person with me whose presence is quite interesting to begin with. A friend from the most unlikeliest of places and possibly one of the most important characters in my life now. Ali Noor. What is up? Most important. Hey. क्या हाल है मुनीब? Long time. Long time, thanks to you. Acha, so let's go very basic in terms of what is the purpose of life. Screw you, man. I thought I might as well start very basic. Very, very basic. Since लोगों की सारी बातें चलती रहेंगी. But what have you through all that you've seen, and it hasn't been an ordinary life. So, what do you think now, जहाँ पे तुम हो, what is the purpose? Do you have one? While you were busy mutilating my face downstairs, I think we both came to the conclusion that the word purpose seems to be an unreal word. Almost like a क्या होता है, mirage. Okay. I think we both also concurred that more than purpose, I think we are discovering the word intent. That it is now all about intents. That we don't have any capability whatsoever to कुछ भी नहीं कर सकते. मैं तो वाकई में अब समझ में आता है कि वो जो ज़तरी ने कहा कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को बचाया, तो वो शायद इस उम्र में तुम भी 40 के हो गए. Finally. ये तो सच हो गया कि आप बस नियत ही मान सकते हैं, इंटेंशन ही नहीं कर सकते. पर्पस जैसी बात करना, इसको इतने बहुत ग्रैंड सी बात जैसे हमने फैसला सुना दिया है कि इसको पर्पस कहते हैं. ये शायद छोटे लेवल पे हो सकता है कि the purpose of going to school is to educate, or the purpose of sitting in the car is to go from one point to point B. But life, मतलब life का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा. बिल्कुल. Purpose तक कहाँ पहुँचे? So, going back to Noori, starting, was there a purpose? If that was a vehicle, yes. point A to point B, what was that? It wasn't a vehicle. At that time, I believed in purposes. A purpose was that life, and purpose was such a vague one, because I want life to be better. I want to be an instrument in making life better. My contribution based around many. I think it was a very how shall I put it? A dual thought. ये कि जो मुझे references थे of whatever Success. I read, and success or purpose, if I may say, which I now in this age I suppose I misconstrued it, or at least misread the whole Dynamic of it. the क्या होता है, the script, if I may say. So other than that, I think the purpose was कि दुनिया को कोई बदलेंगे, हम दुनिया बदलेंगे. बिल्कुल. And at the same time, there was the real purpose, if I may say, was just to be able to make music, which I never kind of paid serious heed to. It was just about making music. But fucked upness in my head, I suppose, made me think about that's not a purpose. It was सबका ही होता है. Music तो सभी बना लेते हैं. मैंने दुनिया बदलनी है. And that's what it was. And इसीलिए फिर निकला एक था बादशाह who realized there's nothing there, and then the song came the पिंजरा. And but अच्छा, जब ये जो भी ने बात की थी कि you misread it and ये सारा कुछ, the idea that I'm just trying to explore ऐसे through कि जब do you also feel, because this is something that I'm kind of toying with and playing around with, कि जब you start to identify with something like music, fame, fortune, success and purpose for that matter, वो वाहिद चीज होती है जो आपसे ले ली जाती है. Absolutely. और कहते हैं कि अच्छा, अगर ये तुझे लगता है कि ये तेरी वजह से था, तो go back and earn it now. Yep. Bingo. Is that something that you've also of course felt? Of course, without a doubt. In every so that means you're not even a player in the bigger scheme of things. It's just such a dangerous thing to even think or forget about even saying.
it's now. Had you talked to me years ago, or in all the places that you've known me, I think today is the only day where I can say what I'm saying. जैसे ही आपको लगता है मैं सक्सेसफुल हो गए, एक फोटोग्राफर के साथ बात कर रहा था, एक म्यूजिशियन के साथ, कि जी आप सक्सेसफुल हो गए एंड आई अर्नड इट, तो वो फिर आपसे ले ली जाती है और फिर आपको दिखाया जाता है कि यार नाउ इट हैज बिकम योर नीड, नाउ टेक इट, नाउ दिखा मुझे. अच्छा, ऑन दैट नोट, व्हेन यू became the Noori success, ये वो सारा कुछ मिल गया because you got it, right? When it was taken away, ठीक है, तो वो जो एक high से एक, you know, because I keep telling everybody on my radio show as well कि यार इतना बड़ा in the future में जो history of Pakistani music लिखी जाएगी, Noori has a very important role in ensuring a new wave of people in music. पढ़े लिखे ये वो जो भी था. Then after giving two of the biggest hits that I think at that time Coke Studio में, लंबे 3 गाने जिसके जब तुमने पहली दफा हमें सुनाया था, मैं मदाना नफीसा वहाँ पे बैठी, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, और वो चल गए दोनों गाने. Then the band broke. How did you deal with that through now's perspective? First, I must say that for me, success, and you know me, वो मुझे समझ नहीं आता है, तो वो उस वक्त भी नहीं समझ में आ रहा था कि success है क्या. Okay. So I had an idea of success, but I was always into it, have felt far from even coming near it, because I look around everywhere and I'm unfortunately a person who looks at the glass as half full. So I've always seen myself as smaller than anybody else in terms of success, because that's just the way I looked at things. So success was never that much. I gave up on it even at Noori's time. Okay. And the proof of that is that neither myself or Ali Hamza ever got affected by it. वो तो हमारे nature में नहीं आया. मतलब बाकी वो तो आपके peripheral लोगों में था. मतलब नहीं, in the sense कि तुमको पता है कि ये space हमें hold ही नहीं करनी आती है ना मुझे. I think Hamza का भी यही है. We don't know how to hold the space of success and hold on to it and everything. I think you're also a bit like that too. But most people know how to hold success. Most people know how to hold on to, you know, whatever they have attained and then build on top of that. I think all our positions have been of like that, like, you know, like that King Bruce's spider, not the King Bruce himself, the spider that's just going up and down, and finally he can make it. So we're just in that up and down space. The spider doesn't give a shit if it's getting success, or you just need to get the fuck up there, right? Yeah. That's what it needs. Yeah. So we've been like that. I think you're also like that. Because किसी तरह हो जाए. But that's not what got to the head. I think what actually got to the head was the other part. That, oh my God, we're capable of, you know, making a change, or so-called this idea of change or whatever. I think what the real confusion is in this time is that we actually, or I won't talk of we, because it's not, Hamza is not like that at all. I'm sure he's not like that. Hopefully but me, like no, I can now say it with responsibility, because I now see him in a different light, that it was only me who built an ego around this so-called attainment of whatever was becoming tangible, if I may say, at that point of time, as things started becoming real. So it was, you know, just an idea of कि हो गया है और इसमें कुछ मैंने किया है, and because I had gone through changes from point A to point B, I attributed all that achievement to that so-called hard work that I thought I'd put in, which was not the truth at all. Exactly. Because that hard work was in fact straying me away. It was always that things happened completely opposite to plan, and that was what turned out. So it took us that's the most important thing that you recognize only now, only much later in life. Hamza knew it from the get go. अच्छा, Hamza had no problem. मुझे यही लगता है कि by the time we realize कि यार ये जो चीज हमने की थी वो एक्चुअली हमने की नहीं थी, वो तो हुई थी हमारे साथ. We were just present luckily. तो ये we living through that. एक होता है आप कोई किताब से पढ़ लें, कोई मजहबी बातें सुन लें, कोई philosophical सूफीस्टिक बातें सुन लें, लेकिन ये सारी बातें कम से कम मेरे तो सर से गुजरती रहेंगी. So I had to live them. Yeah. One had to go through them. Yeah, and you've gone through like
major share of major share of that Oh shit. my God. Acha, so you've also almost died. Yes. You've almost also lived. Yes. So in the middle of both these extremes, have you ever felt like, you know, ये जो अल्फाज यूज होते हैं, depression, anxiety and all of these things, कि यार this isn't working out in my favor, how do you get yourself to a point where you don't blame and you accept? या मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी not accept करने की और fully blame ना करने की. Okay. I think and I'm only sharing this with you now because every time we meet there's a new perspective coming out from me, you know that. And I think last we talked was a month ago almost or more. Probably घर पे, हाँ. So two things I realized that this would have carried on had it not been the death of Nano and that sexual harassment thing that happened. Both those things I think were the first real, if I may say, shocks that sort of ये सिलसिला डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ मुझे रिकग्नाइज ही उस वक्त हुआ जब ये दो इवेंट्स बैक टू बैक हुए. और इन दोनों इवेंट्स पे आई जस्ट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जैसे आपकी पूरी स्किन का एक पार्ट कोई निकाल देता है. आई गॉट अ चांस टू सी what the hell is brewing inside for so many years. Depression is a very real thing. I would be very unempathetic towards anyone who identifies with the word in the way that it operates. Anxiety, many psychological problems that people go through. But I unfortunately had no relationship with this nomenclature. I never did, and unfortunately I still don't either, because even though I've gone through it and everything, I have just had to approach it exactly the way I approached guitar. I've never learned it from anyone, you know what I'm saying? I just had to figure it out. 6 strings, and honestly just impossible. मुझे मेरे सामने तुम गिटार लर्निंग किताब भी रख दो तो बस कुछ है, और आज तक यही चलता है कि वो नहीं समझ में आती. सब सीख गए, मैं नहीं सीख पाऊंगा. तो वो फिर एक और रूट से उसको टैकल किया, और वो रूट में डिफाइन. Do you think ये तुमने जान के अपने आप के साथ ऐसे this path of experiential learning जो almost शुरू से था कि यार मैंने ये खुद करके देखना है, मैंने टेनिस खुद सीखनी है, मैंने गिटार खुद सीखना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जो भी करना है, वो ये मैं की वजह से था या ये हो रहा था? sheer ridicule. एक बहुत because that's a good point, because you weren't the most authentically cool child. That's what I'm saying. So I think I have just I have to call a spade a spade. I was ridiculed, still am. You know how it works. Yeah. And instead of getting aggressive like people can do for self-preservation, as a child I've always given in. So whether it's I used to play tennis, and I remember how Munib used to come there and used to be, you know, like, oh, you don't have a good car, you know, you look like it, you know. And other people, rich people at Gymkhana used to come. Yes. And I had an FX. So, but it didn't ever made me try to get a fancy car. I always thought, okay, I'll take another route. So all my songs, if you notice, come from that ridicule of going from, and I've been dealing with it since a child, like always my back against the wall, just because my energy is not aligned with anybody else. I had to become this famous or whatever the hell just to find even that slight bit of acceptance. Personal validation. Not even personal validation. मुझे प्यार तो बहुत करते हैं यार. कौन सा बंदा जो तुम लोगों में से कभी किसी आदमी में, I don't think मेरे कोई लोग हैं जो मुझे बुरा भला बोलते हैं. हर बंदा, even जो मुझसे लड़ते भी हैं, they are at the end of the day मुझे उस तरह से रिडिक्यूल नहीं करते. मेरा रिडिक्यूल क्या था, सिर्फ एक जगह पे, जो आज तक तुम भी कह रहे थे बात, you know, कि जो भी वजह है जिसकी वजह से, maybe it's my high energy, maybe it's my inability to stay in tempo, or maybe it's my inability to hit the tennis ball right, or even my failure to get the right shoes even though I had the money but I choose the wrong one, right? You know that, right? Yes. So उसका रिडिक्यूल है, वो आप सबसे मिलता है, आपसे भी मिलता है. उसके साथ डील करते करते मैं थक गया था, क्योंकि उसका सिर्फ एक स्टांस था कि यार मैं एक फर्क आदमी हूँ. मुझे बहुत शौक है इंसानों का, मुझे बहुत प्यार है इंसानों से,
तुम हाँ। जानते हो मेरा, हाँ। लेकिन बस मैं फर्क हूँ, और मेरी जो भी मखलूक है, जो भी मेरी खलकत है, या जो मेरी Tribe. शेप है, ट्राइब भी क्या, मतलब मैं एक लेट्स से अल्बाइनो कह लो, या मुझे कोई एक हाँ, अच्छा, म्यूटेशन ठीक है। कह लो, हाँ, हाँ, जो भी हो, मुझे क्या पता, हम्म, बट उसमें मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ फिट होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो रिडिक्यूल ड्राइव करता था, रिडिक्यूल इस तरह से ड्राइव करता था कि मैं पॉइंट तो प्रूव कर सकता नहीं हूँ। हाँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं म्यूजिक करूँ, तो खुद सीखते हैं। बट इस पॉइंट पे do you think your relationship with your parents had anything to do with you wanting that acceptance to be, because Sure. see अगर आपके पेरेंट्स आपको शुरू में बता दें कि यार बेटा तुम्हारी एनर्जी ऐसी है, तुम ऐसे हो and that's okay, हाँ, you don't have to fit in with these supposedly cool or uncool people, right? You just have to be yourself. हाँ. So how was that while growing up? मतलब you know my parents very Yes. well. Yeah, तो उनसे ज्यादा innocent लोग तुमने कभी देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे, तो but क्या उनको कहना? that's not a novelty in terms of you. Like देखो, they're the nicest people, both of them. The question is कि do you think, and ये सवाल हो सकता है तुम्हें अभी शायद जवाब ना भी आए, क्योंकि it takes a loss or something like that when you realize that कि you're always trying to one up your parents' ability समझ गया. to kind of grow you as the person you wanted to be. बिल्कुल सही कह रहे हो. मैं बिल्कुल ये मेरे लिए एक नई थॉट है, but it feels right. What you're saying makes sense. कि यार पता है, सारी बात आकर के एक ही पॉइंट पे खत्म होती है कि एक ईगो है, एक अना है. सीधी सी बात है. Why to beat around the bush? वो आपकी मेकअप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वो आपको आपकी बालों की तरह, आपकी शक्ल की तरह, आपकी पूरे जो तुम्हारी हाइट है, कलर आइज है, उस तरह का एक वही है जिसके अंदर ही सब चीजें फिट होती हैं. यानी कि जिसे तुम पहचानते हो अपने आप को, वो तुम्हारी ईगो ही है. मगर वो उसकी जो भी सोसाइटी में वैलिडेशन इश्यूज, वेरिफिकेशन इश्यूज, एक्सेप्टेंस इश्यूज, ये सब कुछ जो है, ये सारे के सारे बस इसी के गिर्द घूम रहे हैं ना. तो वो है सारा मसला. आई मस्ट कन्फेस, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ईगो कितनी बड़ी है, especially since the last couple of months, as I've now started, when I'm done blaming the deaths and the sexual harassments and the parental issues and the wife issues and the girlfriend issues and the children issues and the grandparents issues and the external issues, all the external. Yeah. I think फिर उसके बाद आप सेल्फ पे, because मैं उसको फाइट करके, मुझे लगता है मेरी कोई मैं लूज नहीं किया उसमें. मैं हमेशा इस मामले में नहीं करता आ रहा हूँ. हाँ. लेकिन जिस तरह से वो मेरी ईगो को फीड करती थी वो चीज, हाँ. अब उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे डील करना है. तो मैं कल पता नहीं किसी से कह रहा था, मैंने कहा अब तो मेरे अब जिस मैं लाइफ के फेज में हूँ, मेरे आगे बस एक आग का दरिया ही है. अच्छा. वो मेरी ईगो है, सामने खड़ी हुई है, और इसकी मतलब मैं आई हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड टू द फैक्ट कि शायद मरते दम तक मैं सिर्फ इसके एक शेड आफ्टर शेड देखते ही चला जाऊंगा, और एंड आई एम ओके विद इट नाउ. डू यू हैव अ प्लान टू यूज what you're going through? Because every time we speak about the music that you had done, and I keep telling you कि यार वो जो तुम्हारे मसले हैं आज जिंदगी के, उन सब के जवाब तुम अपनी म्यूजिक के थ्रू दे चुके हो. और हम मुझे आगे हिट करते हैं ना, वो मेरी जैसे हम उस दिन घर पे बैठे हुए ऊंचा की बात कर लें, या हम कितने और गाने, बोल की बात कर लो, खला की बात कर लो, इतने सारे गानों की हमने उस दिन हम घर पे बैठ के ये बात कर रहे थे कि so much of your music, if you just sit down and listen to what you were saying, has the answer to a lot of problems. And this is something that I think Trent Reznor की म्यूजिक के बारे में, या हम जो रॉक एंड रोल म्यूजिक हिस्ट्री की सुनते आ रहे हैं, वो बहुत पहले आपको जवाब मिल चुके होते हैं, सवाल आप 40 साल के बाद करना शुरू करते हैं. So वो do you now have a plan to kind of which is why Bryan Adams is still singing the same songs but in a completely different way, Munib, do you think I can plan anymore? I want to know for the I don't think I'm in a position to plan. But are you in the sense, are you intending on using what you have discovered for yourself to make better, more
I'm only better music, because the last album I'm not going to comment much on, but you know my take on that. But are you using this supposed consciousness, या ये जो awakening सी zone है, या ये जो मसले हुए हैं, मतलब Nano's death, the sexual harassment case, the way you dealt it, the way you're dealing with life right now, the kitaben that you are reading, the things that you are doing, you know, separating yourself for the time being from your family and other things, just to create better relationships around yourself in a way that only you can be as effed up to do so. Yeah. But is that converting in any way into Music? None. Nahi ho. Absolutely none. In fact, I've completely given up on the idea of trying to do it. Can I just confess one thing to you? I No. saw my music as... So दो बातों को कंसिडर करते हैं. एक, पुराने गाने हम जब भी ऐसे गा रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं गाता हूँ, अच्छा, because it hits me the most, सबसे ज्यादा तो मेरे पे अप्लाई करता है. So all my criticisms of the society or my observations about people that I made in my songs, and I've always been doing that. Hamza writes very personal songs, you know. Yeah. So Noor's personal songs come from him. Yeah. And Noor's songs about society The world and the world have come from me. Yeah. I'd not expected them to come and bite me in my own ass. Bilkul. So heavy. So every single song, even Parchana, which is not even written by us, comes and its lyrics start affecting me as a message to me. Yeah. Fuck the world. Yeah. I don't give a shit about the world. It's just to me. So एक तो वो बात है. अब इस कंटिन्यूम में जिसमें मैं चलता आ रहा हूँ, for instance, ये पूरी एल्बम जो मैंने नई लिखी was in retaliation to the harassment thingy, and it turned out to be an amazing opportunity to address, you know, whether it's my innocence or whatever, because I have not taken any position on it and I don't intend to either. But to catharticize it with myself, I wrote an entire album. I told you about it. And just recently I said, it's nothing but a push in my ego because I just want to prove a fucking point. Right? So I had to discard all of that. And I'm very serious. Now, something that you might like to hear, you personally as Munib, my friend, will be happy about. I think now the only intention is to make music for the sake of music. हाँ, लेकिन वो म्यूजिक कब कर रहे हो? जैसे उस दिन वो जो कंजरी गाना था, वो हमने 3 वर्जन तो मैंने एक ही दिन में सुन लिए थे. The thought behind it is so honest and so you, ठीक है? Although I was missing Hamza's vocals on it, but वो एक separate चीज़ है altogether. My voice कि अब तुम्हें लगता है कि हम लोग इतनी बातें करते हैं कि हम वो बातें इंटरनलाइज नहीं करते, हम एक्सटर्नलाइज कर देते हैं करके. और वो हम लोगों ने पहले भी घर पे भी बैठ के यही बात कर रहे थे कि यार, क्योंकि जब हम लेट्स अज्यूम छोटे थे या जब हम आप म्यूजिक लिख रहे थे, तो आप इतने बातूनी शायद ना हो. आई एम मोर देन श्योर यू प्रोबब्ली डिड नॉट इवन हैव दिस मच कैपेसिटी टू क्रिएट दिस वर्बोस अराउंड यू कि यार अब जो बंदा आएगा उसके साथ मैं 1 घंटा बैठ के उसकी मत मार दूंगा, उससे बातें कर करके उसको रिलीजन, ड्रग्स, लाउड थिंकिंग टूल किट्स हैं. मतलब ये एक बड़ी इगोइस्टिक हरकत है कि मैं हर इंसान को यूज कर रहा हूँ. हाँ, टू डू लाउड थिंकिंग. ये मुझे कल्चर मिला. हाँ, अभी ये करते हैं. जिसको मौका मिलता है देखता. आई थिंक तुम भी करते हो, सब लोग करते हैं, लाउड थिंकिंग करते हैं. बट because you are the person, the reason why I'm saying that, मैं उसको internalize कैसे करता हूँ, जब मैं साइड पे होकर उसको लिख लेता हूँ. बिल्कुल ठीक है. हमजा ये कर लेता है. तुमने ये करना छोड़ दिया. तुम कर लेते थे, तुम म्यूजिक गिटार के साथ बोलते थे जब तक मैं अकेला था. हाँ, जब तक मैं अलोन स्पेस में था मैं करता था. वकालत के टाइम मुझे याद है मेरी. मैं अब सिर्फ इतना तुमसे कह सकता हूँ कि मैं फाइनली फिर से अलोन स्पेस में चला गया. बिल्कुल चले गए. तो चांसेस आ रही है कुछ आ जाएगा, लेकिन वो नियत बात नहीं. म्यूजिकली नहीं मतलब मैं क्योंकि तुम फिजिकली तो चले गए हो, बट आर यू alone there in that छोटा सा room? Are you alone mentally, emotionally? Are you seeking? And it's a journey. I can see it.
and I relate with it just exactly how guitar happened or certain instrument. मुझे बस एक चीज की बहुत gratitude आ रहा है finally. I cannot be excited about it because I'm too tired to be excited. But it does feel like that as I'm experiencing this aloneness as opposed to loneliness, which I was dealing with for the last couple of years, and you know how bad the loneliness has been, and you know it because you go through it as well very badly, and Hamza has gone through it even earlier, so I can understand that. But मैंने experience अपने हिस्से का करना था, बिल्कुल वो खत्म हो गया. अब अगली space है aloneness की. aloneness में usually कुछ ना कुछ आ जाता है, बस सिर्फ ये कि चूंकि पहला experience हो चुका है ना. मैं पता नहीं किससे कल परसों एक बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरा म्यूजिक, उन्होंने कहा म्यूजिक कुछ बन पा रहा है, मैंने कहा मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि मेरी कुछ ऐसी पोजीशन, जैसे मैंने यूएफओ देखा हो 1998 में या 1999 में, और वो यूएफओ कुछ देर टिका है और उसने अपने पर मुझ पे कोई लाइट डाली है, कुछ हुआ है इंटरेक्शन, और ये सब गाने गुने बन के रुके. उसके बाद वो यूएफओ चला गया और मुझे कोई धोखा सा पड़ गया कि दोबारा आएगा. यस, मैं उसके इंतजार में बड़े टाइम गुजारा. ये वही आइडेंटिफिकेशन वाली बात थी जिसे हमने शुरू किया था कि व्हेन यू थिंक कि ये जो हुआ है ये मेरे साथ हुआ है, वो होता आप ही के साथ है, बट देन यू in that time when it had happened or it is happening, you start saying कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ. अगर ये तो चलो उसका एनालिसिस है ना, जो उसका बेसिक नेचर ऑफ दैट एक्सपीरियंस है कि वो नहीं कि वो चली गई, वो आ ही नहीं रही है, और मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ इतने से. अभी लगता ये है, अच्छा अभी भी मान है कि आएगी, यकीन है कि आएगी, क्योंकि वही तो है जिससे सांस लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं बस समझ में आया है कि वो यूएफओ नहीं थी, वो कुछ और था. मैंने उसको यूएफओ का नाम दे दिया था, और मैं उसको उसी फॉर्म में देखना था. उसकी यूएफओ से मेरी मुराद है उसकी कोई शक्ल थी, उसका कोई सॉसर था, फ्लाइंग सॉसर टाइप लाइट होगी, जो भी हमारा एक विजन होता है. मैंने उसको उस तरह से किसी कूजे में बंद किया था, मैनिफेस्ट कर दिया था. उसकी शक्ल अपने दिमाग में थी. इस केस में एक सर्टेन वे ऑफ राइटिंग म्यूजिक, एक सर्टेन लिरिकल थिंग, सर्टेन वे ऑफ सिंगिंग, सर्टेन स्टाइल ऑफ प्लेइंग गिटार, वो सब चीजें बिल्कुल ही वो उस वक्त की बस चलती आ रही थी, और बस उसी के छोटे इधर उधर कहते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर हो रहे थे. उसकी मेरी बस हो गई फाइनली. तो फिर नेचुरली ये था कि अच्छा कोई और यूएफओ ढूंढ दें. मैं अब उससे जाके बाहर निकला हूँ. अच्छा, क्योंकि पहले वो जब यूएफओ से पहले का टाइम था ना, जब ऐसे मैं कमरे में बैठा अपने दफ्तर में या कुछ कर रहा होता था, उससे कोई यूएफओ आती नहीं थी. वो मैंने बाद में हाइंडसाइट सोचा ओ ये तो यूएफओ थी. इट वाज नेवर अ यूएफओ. ठीक है, it was nothing. So you've recently discovered this whole self aura of spirituality and discovering whatever the F you're discovering and about self and ego and all of that. If you were to kind of consolidate that thought of philosophy of who you are now and what is the result of everything that you studied, वो क्या है? Surrender. That's it. That is it. So well placed. मतलब ये अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, when you surrender, is there a possibility that you could also think of, we've also spoken about singularity so many times, but उसको if there was something that you could undo in the past, would that be a thing for you? नहीं होता ना, क्योंकि आप जब इधर आ जाते हो तो आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते. मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा केवियट बता दूं स्पेस का, जिससे बचा जा सकता है, और उसे कहते हैं सरेंडर का तकब्बुर. ओए अच्छा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? हाँ जी. ठीक है, नाइस, आई लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि रियल सरेंडर में फूंक निकल जाती है, बोलती बंद हो जाती है, पॉइंट, और पिच बड़ी गिर जाती है आवाज की, ऐसा कर गए. और वाकई तो बातें तो सही हैं, सब कुछ हम सही कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी बैठे हैं, अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, नियतें भी बनाई गई हैं कि कुछ अपना लुच पूरा हो जाए, कि हमारे सेटिस्फैक्शन, कोई भी किसी किस्म की सेटिस्फैक्शन, और दुनिया का भी कोई छोटा मोटा
सोचो ना सोचो, मगर हाँ। दुनिया के सामने लगा रहे हो, घर बिल्कुल, में तो हाँ। नहीं रख रहे हो, घर के ऑब्वियसली, बाहर हाँ कैमरे लगाए हुए, माइक्रोफोन लगाए हुए। हाँ। ये सारे मामलात की एक गंभीरता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है, और ये भी ईगो को फीड करते हैं भाई। देखो, ईगो और को फीड किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं रह सकते। मैं से हम हाँ। इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम में से कोई भी हाँ। एक ऐसे लेवल पे जा सकता है या चला गया हुआ है जहां पे वो अपने आप को ईगो से, तो मैं इसलिए कहने लगा था अगली बात हाँ। मैंने काट दी। सॉरी। फिर एक ही चारा है, सिर्फ और सिर्फ पहचान लेना, अवेयर कर जाना। हाँ। तो पता ही लगा कि सरेंडर कहना तो बड़ा मजे की बात है, मगर उससे पहले एक बहुत सीरियस मामला है कि अवेयरनेस, कि मेरे लिए मतलब ये है कि कंकॉक्टेड थॉट ना बना। अवेयर है, जो सच दिखता है, जो हक दिखता है, उसके बारे में एटलीस्ट, इवन इफ इट डजंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी तुम्हारा दिल, क्योंकि मुझे लगता है हमारे दिल की ताकत जो है ना, वो है इस प्योरिटी में। कोई दुनिया का इंसान नहीं जो इससे बचा हुआ है। तो वो जो ताकत है ना दिल की, वो प्योरिटी है। वो प्योरिटी क्या करती है, वो ही अवेयरनेस क्रिएट कर देती है। फिर आपका ये मनोज जहन का मसला है, हाँ। कि वो साला उसको पता नहीं किस किस जर्नियों से गुजर के उसे फिर अवेयरनेस तक पहुंचने के लिए दिल तो मेरा दिल नहीं मान रहा यार, दिल नहीं मान रहा है, तो वो तो बड़ा प्योर इंस्टेंट है। बच्चे क्या जागरों तक में होता है दिल का मामला। दिमाग के मामलात हैं जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ईगो के बारे में बात भी कर रहे हैं। दिल में क्या ईगो होगी, दिल का तो दिल को तो बस वही चाहिए, दिल इन्फिनिट है ना, दिल तो अननोन है। हाँ। दिल इज वेयर द अननोननेस ऑफ द वर्ल्ड इज, एंड माइंड इज वेयर द नोननेस ऑफ द वर्ल्ड इज। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है, हमजा पुट से, यही हमारे बस में एट बेस्ट अगर है, एट बेस्ट अगर है। आई डोंट थिंक ये कहना ईगो किल करने का मतलब हाफ ऑफ करो, ये कोई बात, इवन ये कहना भी सिली लगता है। इट्स लाइक टॉकिंग रॉन्ग मैथमेटिक्स, you know, or using the words such as surrender or acceptance in a way that is just words, you know. So I read somewhere इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, माने के ज़बान से इकरार करना और दिल की तस्दीक होना, ये दो फर्क मामलात हैं सपोज। तो आई सपोज ये उर्दू में एक वर्ड है बतदरीज, यानी कि ग्रेजुअल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चल के कोई जर्नी है। आई थिंक इतना मैं सरेंडर के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ जितना मुझे समझ में आया कि यार आई हैव जस्ट सरेंडर टू द फैक्ट कि इसका कोई एंड नहीं है, तो इट्स ओके। अच्छा, so we've grown up in a time kind of similar where we were taught a few concepts of masculinity, and that's something that I want to touch upon separately, because हम लोग ऐसी जगह से आए हुए हैं और ऐसे mindset से आए हुए हैं जहाँ पे you know, sex, drugs and rock and roll masculinity was supposed to be like hyper masculinity, and also toxic masculinity, where we were supposed to be the controlling feature, and we were supposed to be the man and dude and the wo wala sara kuch, and that's the music that we heard while growing up. That's the kind of people that we were exposed to in terms of our ideals, not at our homes. Uncle ऐसे नहीं थे, but हम लोग exposed उस तरीके से थे कि भाईजान यही है rock and roll. Lenny Kravitz हो गया, Eddie Vedder हो गया, Pearl Jam, anybody you heard, whether it was Iron Maiden or whatever, or all that, you know, situation. Now, the term masculinity has kind of become a derogatory term almost for men. For somebody who's kind of, you know, seen the fame, the, you know, the chicks, you know, even because I remember my first ever concert that we were hosting, my girlfriend at the time was doing that. I was like, chala. So as one of those sort of like boys that you were, now as an older human being, wiser, semi-wiser human being, what do you think is masculinity now? How would you want to teach that to Azad? Now I'm going to give you a very twisted answer, because please, that's the least I'd expect. You probably didn't know this. So as you were mentioning the boys and the rock and roll, the Lenny Kravitz and the Eddie Vedders and everything, I think I only like their music.
band that I really liked. Hmm. I really liked and identified with, and I watched their videos. I barely watched Pearl Jam. I've heard the series a lot, but the videos that I would watch and that I'm going nuts on were bands like Poison and Motley Crue, and they were guys that wore girl clothes and had makeup on and had blonde hair, and they were my ideals. But those were hyper men of that time. The 80s men. So what I'm trying to tell you is, मैं तो थोड़ा डम आदमी था कि मेरे आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी उसी वक्त से फक हो चुकी थी. By the time I got into the boys space, which probably everybody is, मेरी situation कुछ off हो चुकी थी. If a guy came to me in my class and wanted to discuss a girl or talk about masturbation or something, I reacted like how Maulvi does. I wouldn't say shit in the class. I refused to interact with the boys in my formative years. And I was desperate to meet girls, even at that time. But the idea of girls to me from the day one was fairies, not sex objects. That's the truth for me. And for whatever reasons, I'm not trying to be like अपनी डेढ़ की मस्जिद नहीं बना रहा हूँ. मुझे वाकई समझ नहीं आती थी ये बातें till very recently. This whole Sanjana actually has introduced me to these terminologies. मैं तुमसे एक बात बड़ी honestly confess करूँ, मैं बहुत ridiculously dyslexic आदमी हूँ. मैं मजाक नहीं कर, you know that. So when you say the word masculinity, it does not invoke in me any of the thoughts that are typically the natural flow of what it means. और मैं उस वक्त जोश में आके बेशक अपनी ईगो में या अपने verbosity में बहुत बातें कर जाऊं. But today I'm confessing to you, and it just thought of me because ये मुझे ख्याल, I would have just answered your question straight on had you not mentioned Lenny Kravitz and Pearl Jam, and this new thought, first time thought occurred to me as I was talking to you. And you know me, so obviously we know that this thing, ये मुझे अभी ख्याल आया. We can analyze it, but the fact was कि मुझे समझ ही नहीं आया. So much so कि जब भी मैंने अपनी जिंदगी में कोई लड़कियों के साथ कोई लाइनें मानने की उस तरह से टिपिकली वो मेरा मामला फ्लॉप. बिल्कुल. ये नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ एक स्टैंडर्ड तरीके से, जैसे तुम लोग या कोई भी लोग बच्चे बसा लेते थे, कोई बसा ले रहा था, वो मेरे से हुआ ही कभी नहीं. So मेरी जिंदगी में सारी खवातीन आई वाया एक्सीडेंट. अभी भी वही चलता है. इसलिए मैं इतने डंके की चोट पे अपनी वाहियातियां करता हूं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या रूल्स हैं, क्या मोड्स हैं. तुम भी जानते हो कि तुम्हें कितना मुझे कंट्रोल करना पड़ता है in all kinds of places. But I think today I'm realizing कि ये वाकई मेरी एजुकेशन ही नहीं थी. जैसे मुझे बहुत सारी चीजें नहीं कर, मुझे मुंह धोना सही तरह नहीं आया. जैसे मुझे तुम्हें पता है, I can't keep up myself like the way anybody can. कपड़े नहीं फोल्ड होते हैं. ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं और ये बड़े जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं. और उसी की वजह से मैंने बेशक उसकी गिर्द एक पूरा अपना एक वो बना लिया हो, एक persona बना लिया हो. But I'm realizing today कि masculinity, especially after the sexual harassment case, this whole drama that went in, I got to think about the whole phenomenon of patriarchy and matriarchy. But eventually all my intellectual thoughts and all those things that I was doing, they just vanished away. To me, it just pointed out to one thing. It's a genuine question of humanism. ये human का मसला आ रहा है कि यहाँ पर एक इंसान का कोई दिल दुख रहे हैं, कोई जुल्म सा हो रहा है, चाहे वो औरतें कर रहे हो चाहे मर्द कर रहे हो. मसला ये है कि ट्रांसेंडेंस तो सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल से इंसान की है ना, क्योंकि इंसान का ना औरत है ना, मतलब मर्द का फीमेल औरत है या कुत्ते का कुतिया है, लेकिन इंसान का तो कोई ना उर्दू में कोई ट्रांसलेशन है जिसमें आप मर्द या औरत लगा सकते और ना ही ह्यूमन के वर्ड को आप जनरलाइज कर पाए अभी तक. तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट आई थिंक मैं इससे ज्यादा समझा नहीं हूँ इस मामले को. और इससे ज्यादा समझने की आई डोंट थिंक कि स्पेस भी है, बिकॉज व्हेन यू कम डाउन टू ह्यूमन, देन दैट्स वेयर इट हैज टू बी. दैट्स द इवेंचुअल सॉर्ट ऑफ जस्ट इफ इट आर टू पीपल at human level connecting or not connecting. If they're not connecting, don't interact further because उसके आगे कुछ अच्छा नहीं होना. But मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ. हाँ, और सबके साथ ऐसे ही होता है. देखो कुछ और होता ही नहीं है. Anything else that happens is trying too hard, and that also is a first step in learning, which is called fail. You know, so
do you think where you come from, not where you are, you come from a place of like you do come from a place of insecurities, that's where art originates. बिल्कुल ठीक है, तो अब जो तुमने देख लिया है जिंदगी में, उसको कहाँ लेके जाने की उम्मीद है, होप है, इंटेंशन है, कुछ है आगे, or have you also kind of confined yourself to the now and said कि बस यही है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता, दिल को नहीं लगता, क्योंकि मैंने 2 बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, मैंने मेरा घर तुमने देख ही लिया है, ज्यादा ही बड़ा है तो उसकी खर्चे खराजात भी ज्यादा ही हैं। मैं जिंदगी में सिर्फ मैं किसी और का भी कोई और भी लोगों कोई पैसे का कोई मदद हो सकती है, मैं करना चाहूंगा, मैं कुछ अपने आप को भी मैं कुछ नए गिटार जरूर कभी ना कभी खरीदना चाहूंगा, और मैंने बड़ी कन्वीनियंटली एक ब्रोक स्पेस को क्रिएट किया अपने लिए कि गुर्बत क्या होती है, और तुम जानते हो कि चाहे इसी के बगैर रहना हो, चाहे वो मतलब सारे वो मामलात जो एक्सप्लोर किए जा सकते थे, पर वो स्टोइसिज्म और एस्थेटिसिज्म से ज्यादा कहीं जा नहीं पाए, तुम समझ रहे हो, यानी कि बस एक वो वाइब आगे जा रहे हो। मैं बिल्कुल जाऊंगा, मगर सिर्फ एक चीज बता दूं कि जिस तरह से मैं जाता जा रहा हूं ना, उसकी जब मुझे जरा से भी बदबू आएगी ना, तो मैं तो डर जाना यार। कुछ चीजें तो आराम से नॉर्मल है, वो तो आती हैं, गाना तो उसी तरह गाना है, गिटार तो वैसे ही बजाना है, सिर्फ और सिर्फ इस दफा नियतों के मामलात में थोड़ी सी अवेयरनेस की ख्वाहिश। So we've spoken about this, I think, a bajillion times already, but I think for the sake of recording this, for your legacy's sake, I think. मुझे पता था, but अच्छा सुन, so the thing is, you came out, Ali Zafar came out, Atif came out, you know, all of that. It sounds wrong. You came out, Ali Zafar came out, Atif came out. All right, man, we all came out. Finally, we did it. In so many levels, we came out. Acha, so thanks for that. Yeah. Acha, so when you guys released your music, there was a whole generation that came out. So अब जब वो उसमें से कुछ बॉयज ने अपने आप को कमर्शियली डिफरेंट एंगल पे ले गए, you have always मतलब fought whatever was happening in you and outside, immediately outside you. For some odd reason, do you think you are, you know, a lot of people are scared of success more than they are afraid of failure. You know, a lot of people say that they're afraid of failure. They're not really afraid of people or of failure, but I think people like you were more scared and still are of success for some odd reason. हाँ बिल्कुल, बिकॉज हमें देखो ना, थोड़ा सा भी उससे उसकी तरफ भागे तो क्या हालात हो, तो डरते तो हैं। देखो यार, तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, तुम्हें पता है। हाँ। मैं तुम्हारे कुत्ता लेगा, तुम्हारी हालत क्या होती? एग्जैक्टली वही मामला। तो that is an honest to God state that you are scared of success. Yes, I'm scared of anything that is I've known from the get-go when it feeds what it feeds inside of you and what its consequences are. I'd read enough books and I'd seen enough movies, just like everybody else, but they affected me way more. It's like, you know, Azad's like so scared of, like even like normal cartoon में कोई horror पढ़ा है, तुम्हें पता है उसको कितना ज्यादा डर जाता है वो, maybe जीबी नहीं डरता है इतना। और मेरी भी पोजीशन कुछ ऐसी है कि मैं जब मैंने पहली बार पढ़ा मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो बहुत अफेक्ट की बात जिससे मैं डरता था, और वही हुआ मैं कि मिर्जा रसवा जिसने जाओ जानदा लिखी, तो वो हमारे जब ए लेवल में लगा तो मैंने पढ़ तो ली, मुझे बड़ा मजा आया। तो उसके शुरू में उसका एक लाइफ स्केच भी दिया हुआ था, तो पता लगा कि जी जनाब साहब ने एक किताब तो लिख ली। उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग सो मेनी थिंग्स, और अपना को पता नहीं क्या सब बनना शुरू हो गए थे कि एक बड़ी क्रिटिकल नोट उनकी किताब से पहले कि बस ये किया इसने, और उसने कुछ नहीं किया। And you know, that's मेरे साथ वही। और सी होता यही है कि ये जो घटिया चीजें हमें याद रह जाती है ना लोगों की,
we become that. yeah. It is not a matter of कि यार हमने 40 और चीजें भी पढ़ी होंगी about let's assume and Blatton and you know वो Hardy Boys and this and that, उसके अंदर भी about the author आता है, ठीक है. उर्दू की भी हर किताब के पहले वो अल्लामा इकबाल का भी आता था, हमें अल्लामा इकबाल की नहीं याद, हमें वही एक स्टॉपेज याद रहता है. और पहले कोई ऐसे फिल्म लेकिन that thing you do याद है वो Tom Hanks वाली The Wonders, that movie fucking traumatized me, man. Yeah. And then other movie just इस तरह की 2-4 movies तुमको पता है. Yeah. अभी traumatizes me. I was like fuck, मेरे साथ हो गया तो मेरा क्या होता. तो तुमने अभी तक एल्विस नहीं देखी, हम तुम्हें कब से कह रहे हैं जाके एल्विस देख लो. मैं तो पता है मुझे फिल्में क्या सेट करती हैं, पड़ जाती है यार. And बचपन से क्या like you know I love watching art which is easy like that, but when it comes to these life lessons of such stark nature, they drove me nuts. So yes, I have a problem with success, even though I mean, and I remember Raza also telling me the story of Elizabeth Browning, this poem, और उसका एक line था, let me count the ways I love thee, और उसमें कहते एक line उसमें थी, the way you turn away from praise. वो भी मुझे बहुत affect करती थी बात. अच्छा, I don't think it's a bad thing. I don't think it's a bad thing that I have been scared of success. There are many other bad things. Yeah. But being scared of success has kind of like, you know, at least got me this far. Whatever it is. वही surrender फिर आ जाता है ना, acceptance आ जाती है. तो बच गए उससे फिर success मेरे दोस्त यार जितने करते हैं, अब जिंदगी के बाद मैं कुछ judgments नहीं पास कर रहा हूँ, बट वही बेहतर जानता हूँ कि वो अपने success में कितने खुश हैं, नहीं है, क्या कुछ है, और each to their own यार मेरे लान पे है. That's all I can say. By the end, I think on that, I think that's good enough. Is basically a good place to end the show. Thank you so much, man.